good. But Bhupinder Singh has been smart. He's out-thinking the batter. Bowling left arm seam. And this time he goes straight down the ground, but cannot beat the fielder at mid-on. It's another dot ball. So dot balls piling up pressure. If you are a stroke maker inside the first overs, and suddenly that false shot comes and you lose your wicket. Big shot coming. This time he pulls it. Gets the delivery but is not able to get all of it. He will pick up a single in front of the fielder coming from deep backward square leg. And Bhupinder Singh completes another tidy over. 4 done. Sky Stars Budgam a sedate start after losing Shabir lefty. A 24 for the loss of 1. 24 runs on the board. They have lost 1 wicket, but Mohammad Ans and Adil Guldan still on the crease. And they are taking the charge right now. बहुत ही ज़बरदस्त मैच हो रहा है स्काई स्टार्स बडगाम और JK11 शोपियान के बीच में. आदिल जो है 12 रन पे नाबाद और मोहम्मद अंस जो कि अभी अभी आए क्रीज पे 2 रन उनके बल्ले से भी बने हैं. हालांकि राना बॉल ही अभी तक ये गेम चला है. 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद, और शायद स्पिन का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ से, ऐसा प्रतीत होता है. जुनैद बशीर के पास गए हैं. पेसर के साथ ही जाना पसंद करेंगे इस बार, क्योंकि ये पेसर्स ने अभी तक ठीक ठाक काम किया है. थोड़ा सा बॉल जो है वो पिच होने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट तो हो रहा है, वो मूवमेंट मिल रहा है और ज़्यादा रन्स बने भी नहीं. अभी राना बॉल ही खेल रही है स्काई स्टार्स बडगाम की टीम, इसलिए वो पेसर्स के साथ ही जाना पसंद करेंगी. जुनैद बशीर के हाथ में गेंद. बॉलिंग चेंज. सामने रहेंगे आदिल जो कि 12 रन पे खेल रहे हैं. 14 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अब कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे. इस पावर प्ले को थोड़ा सा यूटिलाइज तो करना पड़ेगा यहाँ पे आदिल और अंस को. जोरदार शॉट ऑन साइड की जानिब. वहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं. प्रयास जरूर था वहां से फील्डर का, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए. उस होर्डिंग से छू के गेंद बाउंड्री लाइन के पार. और इसी प्रकार के इसी टाइप के शॉट्स खेलने पड़ेंगे आदिल को, क्योंकि पावर प्ले जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इस गेम में. पहली गेंद पे 4 रन मिलते हुए अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ होगा आदिल का. 28 रन बोर्ड पे. आदिल 16 रन 15 गेंदे. मोहम्मद अनस बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है जितना हमने सुना है इनके बारे में. टेक्निकली वेरी साउंड. ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से खेला. 1 रन जरूर मिलेगा. अब स्ट्राइक पर रहेंगे मोहम्मद अनस जुनैद बशीर के सामने फॉर द फर्स्ट टाइम. जुनैद ये पहला ओवर कर रहे हैं, थोड़ा सा धीरे डाल रहे हैं गेंद को. वो पेस आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं. आपको जो भी अगर ट्राई करना है शॉट्स, तो आपको अपने खुद के बलबूते पे वो शॉट्स खेलने पड़ेंगे. लेकिन थोड़ा सा समय ले सकते हैं मोहम्मद अनस, अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं. हालांकि दूसरे एंड पे आदिल जो है वो बड़े शॉट्स की तरफ जाएंगे. ये तो काफ़ी सीधी सी बात है, उनको बड़े शॉट्स खेलने ही है, क्योंकि इसी काम के लिए उनको भेजा गया है. मोहम्मद अनस. ओह ब्यूटीफुल ड्राइव, लेकिन सीधा खिलाड़ी के पास गई ये गेंद. हालांकि शॉट में कोई भी खराबी नहीं थी, बस वो गैप को नहीं ढूंढ पाए अनस. और ये क्लास दर्शाता है इस खिलाड़ी का. टेक्निकली वेरी साउंड बल्लेबाज दिखाई देते हुए अनस. तीस रन बोर्ड पे लग चुके हैं. ये 5वां ओवर चल रहा है. इस बार डाउन द ट्रैक बड़ा शॉट, हवा में गेंद और गेंद स्टैंड्स में डिपॉजिट होती हुई. देखिए आदिल को जिस काम के लिए भेजा है वो तो वो करेंगे. आप ज्यादा देर इनको चुप रखने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये बड़े शॉट्स तो खेलेंगे और इसी टाइप के शॉट्स खेलते हैं आदिल. इनका जो वो गियर है वो एक ही वे में चलता है. द 5th gear down the track and deposited the ball in the stands. अब थोड़ा सा वो रन्स की स्पीड को बढ़ाते हुए आदिल.
आदिल 23 रन पे खेल रहे हैं, हालांकि मोहम्मद अनस को ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है, 3 ही गेंदें खेली है अभी तक अनस ने, लेकिन ये आखिरी गेंद बिल्कुल अनस फेस करेंगे जुनैद बशीर के सामने। करंट रन रेट जो है वो 7.66 का, ये 5वां ओवर, और इसके बाद केवल एक ओवर पावर प्ले का। कम से कम 15 से 20 रन तो वो दिमाग में ज़रूर रहेंगे कि पावर प्ले में जितने रन चाहे उतने बटोर सकते हैं। स्ट्रेट बैक टू द बॉलर, डॉट गेंद के साथ 5वें ओवर की समाप्ति, 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे स्काई स्टार्स बड़गांव। Five overs of the power play. The 6th over coming up. 37 runs scored by Sky Stars, losing an early wicket. So far, 3 bowlers have been used. Junaid Bashir, expensive, none for 13 in his first. And Bhupinder Singh has been the pick of the bowlers so far. He has picked up a wicket in his first over and giving away only 6 runs in his 2 overs. Mohsin CP, Junaid Bashir and Bhupinder Singh, the 3 seamers have been used so far. They might be waiting, the captain might be waiting for the power play to end, and once the restrictions are over, then the spinners might come into play. Bhupinder Singh is coming for his third. On strike is Adil Guldan. And this over will see some drama because Adil Guldan would definitely like to take him on. He tries, but there is man back on the boundary, deep mid-wicket. Deep mid-wicket and long on are the 2 fielders outside the ring, outside the 30-yard circle for both of these batsmen. And particularly Adil Guldan. He likes to dance down and create his own lengths and try to attack the bowlers. Projected score looks 147, but they would definitely like to score in excess of 160. Bhupinder. Mohammad Anas guides it straight to the fielder. Adil Guldan is quite eager to go and take strike. This time around, Mohammad Anas, he will hardly play any foul shot first up. Always eats up deliveries, likes to take some sort of a time first up in order to get charged. And once he's in, he does play strokes. Once again, gets away with that. That was short wide, had to be put away since there was no fielder backing up on the offside. And that was a free hit. But Mohammad Anas was not able to latch onto that. It's another dot ball. Bhupinder Singh has bowled well and once again beats him comprehensively there. Mohammad Anas trying to use the pace of the bowler. Third man is up inside the ring. And what happens sometimes that the batter plays it straight into the hands of that lone fielder fielding in that short third man region. Bhupinder, 3 dot balls on the trot. Invites the foul shot from Mohammad Anas, who was trying to go over the offside. That's 4 consecutive dot balls. Mohammad Anas is feeling the heat. And Bhupinder Singh, how well has he bowled? Never looking to bowl express pace. Maintaining the line and length. That's a crisp drive. That is Mohammad Anas for you. Signature Mohammad Anas shot. 4 more runs. And that is his first boundary. And that's a boundary to close over number 6. So power play is done and dusted. 42 for 1 is the score for Sky Stars Budgam, scoring at a run rate of 7 runs and over. That's pretty okay after losing that early wicket of Shabir Lefty. Overpitched on off stump.
on the fourth stump rather, and leaning into the drive, finding the middle of the bat and picking up a boundary to boost his confidence after 4 consecutive dot balls. TCI Max presenting Bijbehara Premier League Edition 5, and this year we have seen some changes. There might be only, in fact there will be only 12 teams participating in the tournament, and those 12 teams are supposed to have one under 19 player. It's mandatory, and apart from them, the under 19 players, only one of them and 3 players from outside J&K. We thank our viewers and the fans supporting Bijbehara Premier League, because we have completed 100,000 viewers, 100,000 followers on the Facebook page of Bijbehara Premier League. Thank you for your continued support. Keep supporting further so that Bijbehara Premier League grows better, it grows bigger in stature, and it lets you an opportunity every now and then to see quality cricket and to play as well if you are a player representing any team. Aman Alvi, the left-arm spinner, has been brought into the attack, and left-arm spinners have been quite successful in these trips here at Bijbehara. Adil Guldan, 25 of 19. Good start. Now the fielders are outside the ring. The restrictions are over. Long on, deep mid-wicket, deep backward square leg. On the offside, a fielder at wideish long off, and a fielder sweeping on the offside at the cover boundary. Another good delivery, slowing the pace. That's a decent pace to bowl at. He was inviting a drive because he had that cover fielder on the boundary and a long off on the boundary too. This time he goes reverse, finds the middle of the bat, but the ball slows down near the boundary. The fielder tracks it down. The batsmen come back for a brace. Adil Guldan has every shot in the book. He can play that reverse lap, the reverse sweep, and that switch hit as well. Apart from powering the ball down the ground, playing over the extra cover, are choosing that mid-wicket and the long on area. Wicket-keeper glued to the stumps. Taking the batter by surprise on that occasion, getting some bounce and the turn as well. Aman Alvi. Using his long levers to a very good effect on that occasion. Beautifully bowled. At the third dot delivery of the over. Only 2 runs given so far. Next ball, he steps inside the line. Man back on the boundary, does well. Bhupinder Singh, you can't keep this man out of the game. That is brilliantly stopped. The batsman rushed back for 2. For a moment, Adil Guldan might have thought that the ball might go straight down the throat of the fielder at deep backward square leg. And Aman Alvi so far has bowled to his field. That's brilliant bowling. Brilliant thinking as well. Final delivery, almost squaring him up completely on that occasion. Adil Guldan has struggled against left-arm spin. That is the end of 7. It's 47 for 1. देखिए थोड़ा सा जो रन्स की स्पीड है वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, लेकिन एक पॉजिटिव बात आपके लिए क्या आपके पास वो विकेट ज़रूर हाथ में है. मोहम्मद अनस और आदिल सॉलिड दिखाई देते हुए, लेकिन साथ में वो रन्स की जो स्पीड है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 140-150 बनाते हैं तो थोड़ा सा चेज़ में आप
दूसरी टीम को स्ट्रगल ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन एनीथिंग बिलो 140 दैट विल बी समहाउ वेरी इजी। इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा रन्स की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करे। 47 रन्स बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी दोनों साइड से शायद स्पिन होगी या फिर से वो पेसर के पास गए हैं। जुनैद बशीर को वापस बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। जुनैद ने काफ़ी अच्छा ओवर किया था। अमान अलवी जो अभी अभी उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन अच्छे साबित हुए। मेरे हिसाब से एक स्पिनर को फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। जुनैद को आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। डेथ में थोड़ा सा स्पिन को लाना पड़ेगा, गेम को थोड़ा सा स्लो करना चाहिए था। लेकिन कैप्टेंसी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है। वो क्या चीज़ चल रही होगी उनके दिमाग में वो तो हम यहाँ से नहीं बता सकते। आदिल स्ट्राइक पे, 8वां ओवर ये जुनैद के सामने। स्टेप आउट ज़रूर किया था, लेकिन वो शॉट जो है वो पूरा खेल नहीं पाए आदिल। 30 रन पे खेल रहे, 26 गेंदों का सामना किया है। और उनके जो थिंकिंग है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे तो बड़े शॉट्स खेलने ही खेलने हैं। वो रन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि आप उनको नहीं देखेंगे वो ज़्यादा वो सिंगल्स डबल्स लेते हुए। बड़े शॉट्स पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। गैप में गई ये गेंद, हालांकि उतना कन्विंसिंग शॉट था नहीं ये। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और, लेकिन पूरे 4 रन देकर जाएगी ये गेंद। कि फिर से आपको एक बार दिखाते हैं। स्टेप आउट जरूर किया था, कवर्स में खेलना चाहते थे, लेकिन लक ही रहा, ये गेंद फील्डर के हाथ में भी जा सकती थी। 50 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 51 बोर्ड पे, और इसी तरीके से खेलने वाले हैं। फिर से स्टेप आउट किया, इस बार बड़ा शॉट, हवा में गेंद कितनी दूर गई है, सीधे खिलाड़ी के पास। वो एलिवेशन नहीं मिला, वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की गेंद ने, और सीधा गई है कैप्टन के पास ये गेंद। इसके साथ आदिल गुलडान की पारी समाप्त होती हुई, और ये तो बहुत ही इजी कैच था और वापस जाना पड़ेगा। दूसरा झटका लगता हुआ स्काई स्टार्स बड़गाम की टीम को। Adil Guldan again is the run-up play, working hard, but that hard work has now been thrown away. The start was there, 34 of 27. He was struggling, and that struggle comes to an end now as he tries to hit Junaid Bashir out of the ground. Junaid Bashir on that occasion using his intelligence, bouncing him up, bowling short into the pitch, no pace offered whatsoever, and an easy catch to the fielder coming from the long on boundary. In the 8th over, losing their second opener, Mohammad Anas is still there, 7 from 9. Now he has to play that sheath anchor's role, and the other batters, they have to revolve around him. Dot 4 and a wicket, Junaid Bashir. And Junaid Bashir is that all-rounder for Sky Stars Budgam. Junaid Bashir, it has been a successful BPL career for him. He has batted well, he has bowled well. Asif Ramzan, the captain of the side, comes into the middle. Asif Ramzan, shy at the stumps, hits it directly. There is an appeal for a run out. It will be sent upstairs. And here comes the signal. Was Asif Ramzan short of his ground? He played, he was looking to take a single. And I think he has comfortably made it. It will be chucked by... It will be checked keenly by the third umpire. It's touch and go. By the looks of it, it is a very close decision. Up to that point, the bat is outside the crease. Has he dragged his bat beyond that popping crease or not? That is the question that the third umpire is looking at.
It's touch and go. It's a very tough decision for the third umpire. The moment he dragged his bat in, the ball and the bat, ball hitting the stumps, on the very same occasion the bat was dragged in. That is a tough decision. Asif Ramzan's heart might be in his mouth. The third umpire checking it from all the angles available to him. There Asif Ramzan turns, the throw comes in, the bat is outside the crease. Now the bat has been dragged in and the stump is uprooted. But at the same time, all that has happened simultaneously and at the same time. This is the angle where the umpire is looking at repeatedly to give a clear verdict. There is enough doubt in that, and the benefit of doubt must go to the batter. Not out is the decision here. So the call has been made. It's a not out. And Asif Ramzan survives. That was a good fielding effort by the fielder. Fielding at short mid-wicket, throwing the stumps down as soon as he saw him coming down the wicket. Asif Ramzan is in form. He's the captain of the side. And he's a brilliant batter in that middle order. Sky Stars Budgam need him there. Junaid Bashir works it away for his first runs. Should look to come back for a couple. Will get it comfortably in the end because the fielder in the deep fumbles. We're talking about the seamers of Sky Stars Budgam. Apart from Mohsin CP, who too bowled well, taking away those couple of boundaries that were given by him on his bowling. He too tried to bowl well within himself. The other two bowlers, they have bowled stump to stump and they have gone under the skin of the batters. 8 overs done. It's 53 for the loss of 2. And the highlights being Adil Guldan, 34 of 28. Shabir Lefty was early to go in the piece, 37 of just 8 balls. Asif Ramzan and Muhammad Anas will be doing the resurrection job for Sky Stars Budgam. Here are the two dugouts, dugout A and dugout B. Dugout A belongs to Sky Stars Budgam and dugout B, you will find the team of JK11 Shopian. 6.63 is the run rate at this stage. And have a look at the picturesque backdrop of Nilandrusu Cricket Stadium. Bijbehara Premier League Edition 5. As a fan, you can be a part of it. And you can win an official merchandise, a cap. BPL engraved on it. It's a premium cap and it's given to the top fan. To become a top fan, you have to share this to 5 of your friends, tag them in, and then if you're shortlisted, you'll be getting that premium cap, the BPL cap, from the management of BPL. In the post-match presentation of this match, Vineet Kumar is the new man in to bowl spin. So spinners, it's a swarm of spinners for all the teams. Be it left arm spin, be those tweakers, right arm off spinners. He's a right arm off spinner, bowling well. And how many times have we seen these matchups used by the skippers of the opposition? Left arm spinners used against the right-handers,
because it's a negative matchup, and against left-handers, you come up with the right hand or the right arm tweakers. This is in the air, but away from the fielder, who's deep on the boundary at long on. Positive matchups, negative matchups. You always think about that as a captain. And in the recently held second T20, the first T20 between West Indies and Pakistan, Gudakesh Moti did not bowl a single over because the two left-handers were there in the center, Sam Ayub and Fakhar Zaman. He wasn't given a ball at all. Left-arm spinner bowling against the left-handers, positive matchup for the batters, and the batters might take him down. It's always a scare for the fielding team. It's a wide given by the umpire Javed Daryal. So far only 5 runs have been given by Vineet Kumar Sarwan. Next delivery, this one has been launched in the air. Has he got the distance? You bet he has. That's a terrific strike by Mohammad Anas. That was in the slot, and Mohammad Anas, he was ready for that. Extension of the arms, lofting it over the fielder's head at long on. And that is a massive strike for 6. And on the next delivery, the revenge has been taken and Mohammad Anas has been castled. A beautiful delivery from the right arm off spinner, going through the defenses of Mohammad Anas after being hit for a gigantic 6 down the ground. Sky Stars Budgam lose their third. 9 overs done. It's 64 for 3. ऐसा लग ही रहा था कि बड़े शॉट की तरफ जाएंगे अनस. एक बड़ा शॉट ज़रूर मारा, लेकिन उसके बाद वो आउट होते हुए अनस वापस जाएंगे. देखिए एक बार फिर से रिप्लेस में जो आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अनस वहाँ पे, बहुत अच्छी गेंद, ज़बरदस्त गेंद. ये ड्रीम बॉल होती है किसी भी स्पिनर के लिए. यू मिस आई हिट. पहली गेंद पे बिल्कुल वो छक्का ज़रूर मारा था, लेकिन दूसरी गेंद पे विनीत कुमार बाजी मार गए हैं. अब थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं स्काई स्टार्स बडगाम, क्योंकि 3 विकेट्स गवा दिए हैं केवल 64 रन्स बोर्ड पे. और कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यहाँ से एक पार्टनरशिप 30 से 40 रन्स की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक डिफरेंस पैदा कर सकती है इस गेंद में. आकिफ गनी को भेजा गया है बैटिंग के लिए. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आकिफ, माफ कीजिएगा आसिफ रमजान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और आकिफ देखना होगा कि वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है. लेकिन ये एक अच्छा स्टेप लिया है. अगर यहाँ पे आसिफ खेल जाते हैं कम से कम 6 से 5 6 और यहाँ से खेल जाते हैं, तो अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ ले जा सकते हैं आसिफ रमजान. उनमें काफ़ी पोटेंशियल है और कैप्टन भी है इस टीम के, तो एक कैप्टन्स नॉक ज़रूर खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए आज आसिफ रमजान को. अमान अलवी के पास वापस गए हैं. लेफ्ट हैंडेड बॉलर के सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये देखना पड़ेगा कि ये बैटल कैसी रहेगी. हालांकि अमूमन देखा नहीं जाता लेफ्ट हैंडेड के सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. छोटी थी ये गेंद, ऑन साइड की जानिब खेला, वहां पे खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद, और 1 रन जरूर मिलेगा. स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए आपको वो डॉट बॉल्स नहीं खेलनी चाहिए. आप अगर वो बड़े शॉट नहीं लग रहे तो आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, सिंगल्स डबल्स में डील कर सकते हैं, और जब आप सेट होते हैं क्रीज पे फिर वो शॉट्स आने लगते हैं. आकिफ गनी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के साथ ही गए हैं, उसी चीज को कंटिन्यू किया है यहाँ पे, और अच्छी सोच है, अच्छा माइंडसेट. पहली गेंद आकिफ के लिए हल्के हाथों से खेला, कवर्स की जानिब सिंगल मिलेगा. ऑफ द मार्क आकिफ एक सिंगल के साथ चीज को कंटिन्यू किया है यहाँ पे, और अच्छी सोच. अभी आपने विकेट खोया है, आप वो ज्यादा डेंजरस शॉट्स की तरफ नहीं गए हैं, अब लो रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं,
और ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस है आपका आसिफ रमजान स्ट्राइक पे अमान अलवी के सामने। ऑन साइड की जानिब इस गेंद को धकेलने में कामयाब, फील्डर बिल्कुल वहां पे पीछे है, 3 फील्डर्स रखे हैं ऑन साइड पे। एक और रन लेना जरूर चाहते थे लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो डिनाई करते हुए आसिफ और आकिफ, आसिफ हालांकि 6 रन बना चुके हैं 7 गेंदों पे, आकिफ जो कि अभी अभी आए हैं बैटिंग के लिए थोड़ा सा वक्त लेना चाहेंगे। अभी भी आपके पास 10 ओवर है, यहाँ से कम अगर आप 100 रन भी बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा। और हमने कल के मैच में भी देखा था कि 177 चेज नहीं हुआ था, हालांकि बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट मिला था एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। अहमद बांडे ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया था, 3 ओवर में 45 रन थे, पावर प्ले में 60 से 70 रन थे मेरे हिसाब से। लेकिन उसके बाद जो विकेट्स खोई है कंटिन्यूसली, तो रन चेज आसान होने वाला है नहीं। और ये बड़ा ग्राउंड है, वो भी आपको दिमाग में ज़रूर रखना पड़ेगा कि इस ग्राउंड के डायमेंशंस कितने हैं। अगर आप स्क्वायर बाउंड्रीज की बात करें तो कम से कम 70 मीटर की बाउंड्री, और स्ट्रेट भी 65 टू 68 मीटर की बाउंड्री है, तो आसान होने वाला नहीं है ये चेज़। अगर 160-170 तक जाते हैं यहाँ से, लेकिन 140 से अगर ये निकल गई है गेंद, गैप में निकल गई है और पूरे 4 रन देकर जाएगी ये गेंद, वो डेलिकेट टच, डेलिबरेट टच आसिफ रमजान का। और ये पोटेंशियल है इस खिलाड़ी में, सिर्फ ताकत नहीं, उस नजाकत का भी वो मुजाहिरा दिखाते हुए आसिफ। उनको पता था कि फील्डर सर्कल के अंदर है, बस उस खिलाड़ी को बीट करना था वहां पे, और बिल्कुल वो करने में कामयाब रहे। हल्का सा टच फील्डर से दूर, जो शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी थे उनको बीट करती हुई, चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार। अमान अलवी अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, इकोनॉमिकल थे और ये ओवर भी ठीक ठाक किया है। 10 ओवर के बाद 73 रन बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पे। आदिल जो है 20s बनाए थे आदिल ने, फिर वापस चले गए। चौंतीस बनाए थे आदिल ने, और उसके बाद आसिफ थोड़े से क्लिनिकल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पारी को और बढ़ाना पड़ेगा आदिल को। आदिल को आउट करके बड़ी मछली को फंसाया था, लेकिन अभी भी स्ट्राइक पे आसिफ है। वो काफ़ी हेडेक साबित हो सकते हैं टीम JK11 शोपियान के लिए, क्योंकि आसिफ बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, स्टेट के लिए खेले हैं और उनका बैटिंग स्टाइल बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है उनका बैटिंग स्टाइल। विनीत कुमार सरवन को वापस बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर में एक विकेट ज़रूर मिला था उनको, और उसी कॉन्फिडेंस को आगे लेकर जाएंगे। विकेट टू विकेट गेंद, एक खिलाड़ी रखा है वहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट पे, वो सिंगल रोकने के लिए अच्छी सोच। आप वो थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड रखिए ना कि डिफेंसिव फील्ड। डाउन द ग्राउंड गए हैं अलोंग द कार्पेट, 1 रन जरूर मिलेगा। ये स्ट्राइक रोटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये वो छोटे ग्राउंड्स हैं नहीं कि आप बार बार गेंद को स्टैंड से पहुंचाएंगे, आपको सिंगल्स डबल्स पे भी काफी निर्भर रहना पड़ेगा। आकिफ गनी 2 रन बनाए हैं, 2 ही गेंदें खेली है आकिफ ने। स्लोअर इन द एयर, बीट करती हुई बैट्समैन को, बाल बचे, कहीं ना कहीं वो आउटसाइड एज लगने का खतरा जरूर रहा था। विनीत कुमार सरवन अपना दूसरा ओवर करते हुए डाउन द ग्राउंड गए हैं, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। विनीत कुमार हल्का डाल रहे हैं, बैट्समैन को ललचा रहे हैं कि आप आइए बड़े शॉट्स खेलिए, लेकिन आसान होने वाला है नहीं। पहली इनिंग में हमने देखा है कि थोड़ा सा विकेट पे मॉइस्चर है, लेकिन जितना जितना आप इस पे खेलेंगे, जितने ओवर्स बीतेंगे, उतना बैटिंग के लिए ट्रैक बहुत ही ज़बरदस्त होता हुआ। फ्लिक्स का इस्तेमाल किया, खिलाड़ी पीछे मौजूद है डीप मिड विकेट में, लेकिन इस बार 2 रन बिल्कुल मिल जाएंगे आसिफ रमजान को। 12 रन पे पहुंचते हुए आसिफ, माफ कीजिएगा 14 रन पे आसिफ रमजान पहुंचते हुए 77 रन बोर्ड पे। और आसिफ को पता है
कि अगर मैं यहाँ पे 3-4 ओवर्स खेल जाता हूँ तो मैं लास्ट में एक्सेलरेट कर सकता हूँ. डेथ ओवर्स में आप बिल्कुल वो रन्स जो है वो बना सकते हैं. 77 रन्स बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पे 11 के बाद 12वां ओवर स्टार्ट होने जा रहा है. और आसिफ रमजान और आकिफ गनी किस टाइप से यहाँ पे खेलना पड़ेगा, किस अप्रोच के साथ आगे जाना पड़ेगा, मैं पूछूंगा इरशाद भाई से. Well, Asif Ramzan and Akif Ghani, both the batters, well, they don't have any time to waste over here because 11 overs have already been bowled. 9 more overs to come. Well, singles and doubles, rotation of the strike is very important here. Don't eat up deliveries to put extra pressure on Asif Ramzan. Akif Ghani, 3 of 4. And Aman Alvi comes back into the attack. Wicketkeeper up to the stumps. The 4 fielders have to remain inside the ring. This one has been hit inside, coming inside the line, across the line. Has that gone for a flat hit? We'll wait for the umpire's signal. By the looks of it, it looks like that the ball might have bounced in front of those advertising hoardings. That was in the slot and beautifully hit for 4. For a moment, for a fraction of a second, it looked like that the ball might have gone all the way for a 6. And this time, that's good cricket. That's smart cricket. After hitting the boundary and letting Mohammad Asif Ramzan to come and handle the strike now. This is Akif Ghani. That is smart work in the batting. 8 of 6. Asif Ramzan, the left-hander, now on strike. For him, the field has to change. And Aman Alvi ensuring that the fielders are at their right and respective places. Next ball steps down and has been cleaned up. This is what I was talking about. When you are not able to score freely at the other end, it puts pressure on the batter who's there to solidify the innings. He loses his cool, comes out of his crease, and he has been cleaned up by Aman Alvi. That is an untimely wicket and a timely one, and he has been stumped. He has been stumped on that occasion. Coming out of the crease, the bowler bowling it wide of off stump, and the wicketkeeper does the rest. Wicket number 4 for JK11 Shopian and Sky Stars Budgam find themselves in all sorts of problems here at Nilandrusu Cricket Stadium after 11.3 overs, and drinks have been called on the field. अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई स्काई स्टार्स बड़गाम की टीम एक और विकेट गंवाया है. 82 रन पे 4 विकेट. अमान अलवी को विकेट मिलती हुई इस ओवर में. 82 रन बोर्ड पे करंट रन रेट जो है वो 7.13 का है. इस हिसाब से अगर चलेंगे तो 143 तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा स्कोर करने का प्रयास बिल्कुल रहेगा स्काई स्टार्स बड़गाम का. और ये वो डिजिटल स्कोर बोर्ड, एक नई टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की है बिजबहरा क्रिकेट एसोसिएशन ने. डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो रही है, उस पर काफ़ी काम किया जा रहा है. इसके बारे में इरशाद भाई आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो रही है, जो आ रही है बिजबहरा क्रिकेट एसोसिएशन, जो बार बार यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है, उसके बारे में कुछ वर्ड्स आपसे जानना चाहूँगा. Yes, absolutely. BCA is lucky to have Parvez Rasool in their ranks because you need exposure, and Parvez Rasool sir has that exposure of playing international cricket, of playing leagues at international level,
And he's using that experience here to let the youth of Jammu and Kashmir and the players from outside the state as well utilize and get exposed to these technologies. It's the digital scoreboard on your screens. It might not be a new addition as per the leagues outside the state are concerned, but here in Jammu and Kashmir, this is an innovation of its own kind. 82 for 4 after 11.3 overs. Hats off to Bijbehara Cricket Association and hats off to the international icon. Who's using all his experience and providing that impetus to the cricket of Jammu and Kashmir. That is Parvez Rasool, sir, for you. He's on your screens along with the other members of Bijbehara Cricket Association. He's watching the match from the stands among the crowd, and that is taking the taste of watching cricket from the stands among the spectators. Aman Alvi continues. Tosses it up and nicely played by Ishfaq Butt, who likes to use those long levers in order to get some maximums and boundaries against the spinners. He's very harsh against the spinners. A pinch hitter. He bowls right arm seam, but his services with the bat are needed here. Akif Ghani looking promising. Riding the bounce beautifully. Will get a single in front of the fielder coming from the cover boundary. And so far, Sky Stars Budgam haven't been up to the task. Their batters have got starts, but none of the batters has been able to convert those starts into something formidable, into something big. Beautifully bowled. Trying to go for that inside out shot to pinch a single in front of long off. Misses the line. It's a dot to finish. 12 done. It's 84 for 4. Bijbehara Premier League edition 5, 2025. And this year, the arrangements in place are totally different. And there have been some changes in the team lineups as well. You should have 3 players from outside the state. And you should have 1 under-19 player at least that is mandatory to play for your side. This is what happens. Under-19 players getting exposed. Under-19 players getting that platform to showcase their talent. And that is what Bijbehara Cricket Association has done differently from other leagues happening all around Jammu and Kashmir. और इरशाद भाई, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा. जो आपने अंडर 19 के लड़कों के बारे में जिक्र किया है, एक अच्छा कंसेप्ट है. वही खिलाड़ी जो है राफिद यूनुस, देखिए अंडर 19 क्रिकेटर कैटेगरी में आते हैं. उस चीज़ के जिक्र कर रहा था कि जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलता है फाइनल्स पे, वो इन्हीं 12 खिलाड़ियों में से ही मिलेगा किसी न किसी खिलाड़ी को. तो एक अच्छा इनिशिएटिव है. इससे जो क्या है, एक बच्चे का मोरल बूस्ट होता है, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी, उनको लगता है कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, तो इससे काफ़ी क्रिकेट को बूस्ट मिलता है जे.एंड.के में. I have seen this lad bowl in other leagues as well, but now this is a different experience. Right arm leg spinner, that's beautifully bowled, almost spooned back. Akif Ghani was surprised with that. Rafid Yunus. A kid on your screens is bowling to Akif Ghani with a field that's well spread out. Long on, long off, deep mid-wicket. All those fielders. And now it will be Ishfaq Butt. And this will be a very good matchup because Ishfaq Butt, he likes to target that mid-wicket region. The ball spinning away and the fielders at cover, fielder at long off might come into play. Rafid Yunus is adjusting his field. Long off has been asked to go a bit wider. That's good thinking. Beautifully bowled. That is exceptional thinking on the part of the bowler. That ball kept a bit low as well,
And Ishfaq Butt was trying to go across the line. That's brilliant thinking. So far, a boundary on the first ball, couple of dot balls. Ishfaq Butt. This time, that is beautifully bowled. Shout for LBW is pleading, but that was missing the leg stump. Umpire Javed Daryal having a closer look at it, but he has bowled with decent pace and he has tried to put revs on the ball. It's the best part of his bowling so far. Rafid Yunus having fielders at the right place, bowling with a decent pace, and the line has been apt so far. But this is a half tracker. Fielder is unable to track that down. That's gone for 4 more. Rafid Yunus, he might be a junior to this level, but he will learn. Trying to just bounce the batsman up on that occasion. That was a half tracker. Rafid Yunus's first over has gone for 9. And Sky Stars Budgam after 13 are 93 for 4. And talking about these youngsters, when they play alongside their heroes whom they are used to watch on their screens, watch in the grounds of the different areas of Jammu and Kashmir, and they happen to play alongside them, and when they happen to play with some players who have represented the state as well as the country, their morale gets boosted, it gets sky high. And that is the exact reason why Bijbehara Cricket Association has made changes in the lineups this year, and having that under 19 one player per team mandatory for every team. That is a very good initiative as far as cricket, the development and upliftment of cricket in this part of the world is concerned. Aman Alvi returns to bowl his 4th. Strokes it down the ground. Man back at the boundary, does well. The batsman will come back for a couple. Akif Ghani has looked good, 14 of 10 thus far. This is the 14th over, 3.1, 1 for 23. Aman Alvi. And Akif Ghani would definitely look to have a go at him outside the off stump, trying to use the pace of the bowler. Is unable to have bat on that ball. It's a dot ball. Pinch a single in front of point and hand that strike back to Ishfaq Butt. And this will be interesting now. 1 for 24, bowling his 4th. Can Ishfaq Butt be the man who injects some spice in this innings? He wallops this one in front of square on the onside. Man back on the boundary. This is a very good field placement. And the bowlers have bowled according to their field thus far. Particularly the spinners. They have come up with some sort of a homework against the batters of Sky Stars Budgam. This time he thrashes it inside out. Man back on the boundary. He's got plenty of work to do, and restricts the batters to just 1. So far a decent over. The last ball, 1 for 26, and Ishfaq Butt might look to target him. Ishfaq Butt gets lucky. That ball falls in the no man's land. He was moving away from the stumps and then he was trying to drag it towards the onside. A strange shot, but nonetheless he survives. 14 overs done. Sky Stars Budgam are 99 for 4. देखिए यहाँ से तो अब वो एक्सेलरेटर पे पाँव रखना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 ओवर्स बचे। कम से कम 50 से 60 रन तो यहाँ से चाहिए, वो 150-160 तक जाने के लिए। उससे नीचे अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक वो साइकोलॉजिकल बैटल जो है वो जीत जाएगी JK11 शोपियान की टीम, क्योंकि फिर वो जहन में रहता है कि चेज उतना बड़ा है भी नहीं। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा यहाँ पे रन्स बनाने में कामयाब रही इसका एहसास बड़गाम की टीम, तो अपने बॉलर्स को कुछ दे सकते हैं डिफेंड करने के लिए। जुनैद बशीर को वापस बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। वो मीडिया सेंटर एंड से गेंदबाजी करेंगे।
जुनैद बशीर अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है जुनैद ने। आकिफ गनी जो 18 रन बना चुके हैं और इशफाक जो है वो थोड़ा सा जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, बड़े शॉट्स की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सही अप्रोच भी है, लेकिन आपको हर एक गेंद पे वो लप्पा नहीं मार रहे हैं। आपको सूझबूझ के साथ यहाँ से बैटिंग करनी है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा बैटिंग बची है नहीं। अपने 4 विकेट्स गंवाए हैं, इसके बाद तो फिर वो टेल एंडर्स की बारी बचती है और उनसे तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं रख सकते। जुनैद बशीर को वापस बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए और इशफाक बट मेरे हिसाब से इस ओवर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटने वाला है। या तो बड़े शॉट्स आएंगे या तो इशफाक की विकेट आएगी। स्लोअर गेंद इस बार। देखिए ये अच्छा अप्रोच है जुनैद का। आपको पता है कि सामने जो बैट्समैन है वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए रेडी है, तो आप थोड़ा सा वो उंगलियां फेरिए गेंद पे, थोड़ा सा गेंद को स्लो डाउन कीजिए और कहीं ना कहीं वहां पे आप बैट्समैन को जो है चकमा दे सकते हैं। बैट्समैन को अपने ट्रैप में, अपने जाल में जरूर फंसा सकते हैं और वही कर रहे हैं। बार बार वो स्लोअर गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए धीमी गति की गेंद, इशफाक बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि गति को पसंद करते हैं इशफाक, लेकिन जब आप ऐसे गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही क्लेवर गेंदबाजी, आउटफॉक्स कर रहे हैं बैट्समैन को अपनी गति से, तो अब बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए, क्योंकि 2 गेंदें डॉट हो चुकी है, अब बिल्कुल एक बड़े शॉट की तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि पता है कि ज्यादा रन्स है नहीं बोर्ड पे। टैप किया ऑन साइड की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। इस सिंगल के साथ 100 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। स्काई स्टार्स बड़गाम 100 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये 15वां ओवर पारी का अभी चल रहा है प्रोग्रेस में। करंट रन रेट जो है वो 6.90। इस हिसाब से 148 तक तो पहुंचेंगे, लेकिन वो काफी कम रहने वाला है मेरे हिसाब से। आकिफ गनी स्ट्राइक पे, लैप शॉट, अच्छा इंप्रोवाइज किया, खिलाड़ी वहां पे बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक बाउंस और द फैंस 4 रन मिलते हुए आकिफ को। हालांकि थोड़ी सी खराब गेंद थी ये, लाइन से भटके वहां पे जुनैद, और वो लैप काइंड ऑफ शॉट खेलते हुए 4 रन जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते हुए आकिफ 22 रन पे खेल रहे हैं, सेट हो चुके हैं क्रीज पे और एक अच्छे हाई नोट पे एंड करना पड़ेगा इस पारी को। देखिए स्लोअर गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बैट्समैन भी चकमा खाते हुए और कीपर भी चकमा खाते हुए। बाई के रूप में यह सिंगल जरूर मिलेगा। जुनैद की जो स्लोअर गेंद है वो काफी कारगर साबित होती हुई। इनका रनअप जो है वो भी काफी स्लो दिखाई दे रहा है, और जब ये गेंदबाजी करते हैं तो बैट्समैन को थोड़ा सा वो सरप्राइज कर रहे हैं अपनी पेस से, और बाउंस भी कभी ऊंचा रह रहा है, कभी नीचे रह रहा है। ऑन साइड की जानिब खेला है, खिलाड़ी पीछे जरूर मौजूद है, गेंद को रोकेंगे बाउंड्री कॉर्नर के पास। एक ही रन मिलेगा, क्योंकि जो दूसरा रन जब भागे थे तो वो पूरा क्रीज पे वो रन था नहीं। एक शॉर्ट रन के चलते एक ही रन इस गेंद पे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 106 4 विकेट के नुकसान पे स्काई स्टार्स बड़गाम। 5 ओवर बिल्कुल बचे हैं। 150 160 क्या यहां से अभी भी ऑन लग रहा है? अगर इशफाक खेलते, आकिफ खेलते, क्या 150 160 तक जा सकती है स्काई स्टार्स बड़गाम की टीम? That will take some doing to get to 150. Ishfaq and Akif Ghani both have got that ability to hit big shots, and these will be final 5 overs. There might be some fireworks coming your way as well. Faisal has been introduced into the attack. Bijbehara Premier League Edition 5, TCI Max, the title sponsors this year. And you can see that dugout, you can see the stands. Crowd coming in numbers again. So far, 6 bowlers have been used, and Faisal lefty has been given the ball. Mohsin CP, Bhupinder Singh, Junaid Bashir, Aman Alvi.
It surprises me why they call them lefties if they bowl right arm medium pace. He's bowling right arm medium pace. Faisal is coming on to bowl the 16th over. Probably might be the death specialist bowler for them, as every team has. Every bowler being given roles, different roles. Some bowl in the power plays, some bowl those middle overs, and some at the death. Faisal is bowling at the death, and he has to be very aware of the situation, because the batters, they are trying to get after the bowlers, and they are trying to take them down for good, because they need runs. Faisal once more. This time, top edge, gets lucky with that. Aqib Ghani was trying to go mid-wicket. They will come back for 2 more runs. That's good running, and that's good game awareness as well. Good communication between the two batters. Mohsin CP, 2 overs, none for 16. Bhupinder Singh has been exceptional. 3 overs, 1 for 12. Junaid Bashir, 3 overs, 1 for 25. Aman Alvi, 4 overs, 1 for 27. Vineet Kumar, 2 overs, 1 for 15. And Rafid Yunus bowling that solitary over in which he gave away 9. Faisal is bowling his first. He goes inside out. Fielder on the boundary. No sting behind that shot. Neither finding that placement as well. So far, a couple of runs. Twice, 5 runs of the over from the first 4 balls. And if you are bowling the 16th over, that is not a bad going for you. He's bowling his first. The batsmen to be dismissed: Shabir lefty, Adil Guldan, Muhammad Anas and Asif Ramzan. In front of the stumps, appeal for LBW. And the ball trickles away to the fence for 4. Amid that appeal, you failed to see the ball as to where it is going. The ball was trickling down to the third man fence for 4, and that gives 4 leg byes to the batter. 4 leg byes to the team rather. That was very close. Height might have been an issue. Otherwise, that was in front of the stumps. Faisal has bowled well so far. Ishfaq is on strike. Will be the last delivery of over number 16. And Ishfaq will definitely try to hit a big one. Comes out of the crease once again. Chance of a run out. Does not hit. Ishfaq, but if that would have hit, he was never in any picture. He was gone. Sky Stars Budgam after 16. A 116 for 4. Akif 27 of 20. Ishfaq Butt 10 of 13. He's struggling. 4 overs to come, 24 legitimate deliveries. He's taking a hydration break, both of these batters, because now is the time for them to score some hefty blows. 40 from 4 will take them to 156, closer to 160, and might turn out to be a very competitive total in the end. Junaid Bashir comes for his 4th. Sky Stars Budgam winning the toss, opting to bat first. A run rate of 7.25 will take them to 145. Might be 10 or 15 runs short. Ishfaq is on strike. Oh, tries to go cute, loses his off stump. That death rattle has been heard by Ishfaq, and he walks off. Beautifully bowled. Junaid Bashir saw him giving himself room. A bowled fuller on off stump, and that off stump has been uprooted. Wicket number 5. Sky Stars Budgam are sinking further here.
Junaid Bashir. Slower delivery, fuller and straight on the stumps. Ishfaq was never in any position to play that shot. He was down and he loses his shape, he loses his off stump, and that's wicket number 5 for JK11 Shopian. That was almost premeditated, exposing his stumps when the bowler was in his run-up. This is not a very good ply. You want to hit those cute shots, you want to go funky, you have to wait for the bowler to cross the umpire and then execute those strokes. Gulzar Guli, the man in. He too is a big hitter of the ball. Strike rate in excess of 160. A cameo from his blade is much needed for Sky Stars Budgam at this stage. Otherwise, they are going nowhere here in the 17th over. Junaid Bashir has been brilliant. 25 runs given. He's picked up 2 wickets. Once again, it's a strange kind of a shot. For a fraction of a second, it looked like that he was leaving the ball, and then at the last minute, he hung his bat outside. His bat is being checked by umpire Javed Daryal, and his bat has not been found meeting those standards set by ICC. The bat gauge has rendered that bat unfit to be played. Javed Daryal spotting it early, using that bat gauge, and those dimensions are not matching the ICC standards, and that's why the bat has to be changed. Gulzar Guli, 1 of 1. Akif Ghani, 27 of 20. And Nilandrusu Cricket Stadium, one of the picturesque cricket grounds in Jammu and Kashmir. You can see the arrangements in place, and you can see the dugouts, and you can see for spectators in the stands, the canopies have been put in place because it's the scorching heat of August, and in the month of August you find the heat taking toll of so many, be the players, be the spectators, the umpires. Comes out of his crease, thrashes it and thrashes it for 4. Akif Ghani is playing an important cameo. It took some time earlier on, but now he's showing the signs of that brilliance that he possesses. Bag of the hand, comes down at the ball and thrashes it wide of extra cover for 4. Junaid Bashir once more. This time, once again, a slower delivery. No sting behind that shot on that occasion, and as a result will earn him just 1. Akif Ghani with that single is on 31. Now he is the man who has to bat through the innings. 32 of 22. Gulzar Guli trying it on the up, finds the fielder inside the ring. The fielding has been brilliant thus far from JK11 Shopian. They haven't put down too many catches. Only one of the catches was put down, and that was a tough chance. This time gives it all, but finds the fielder yet again. Yet again a single. That's brilliant bowling after being hit for a boundary. Junaid Bashir's day with the ball ends. He's gone for 33 of his 4, taking up 2 wickets. 17 overs done.
Sky Stars Budgam 124 for the loss of 5. आखिरी 3 ओवर बचे इस पारी के, कम से कम 30 से 40 रन उस जहन में ज़रूर चल रहे होंगे। एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल देना चाहेंगे बॉलर्स को स्काई स्टार्स बडगाम की टीम, लेकिन जिम्मेदारी रहेगी आकिफ पे, क्योंकि सेट बैट्समैन है, 23 गेंदें खेल चुके हैं, 33 रन बना चुके हैं, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके शोल्डर्स पे और बड़ी होती जा रही है। इस इनिंग को फिनिश करना पड़ेगा उनको, और कम से कम यहाँ से अगर आकिफ 20-25 रन और बना के जाते हैं तो बिल्कुल अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी स्टेट में लाकर खड़ा कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर अभी 146 दिखाता हुआ, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं कम रहने वाला है। आपको 146 से ज़्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम 150-160, तो एक साइकोलॉजिकल विन ज़रूर रहेगा। डाउन द ट्रैक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अलोंग द कार्पेट गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के पास, केवल 1 ही रन मिलेगा। इसके साथ 124 से बढ़कर स्कोर 125 रन। गुलजार अब स्ट्राइक पे रहेंगे। क्या गुलजार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर सकते हैं बैट से? क्या एक इंपॉर्टेंट हैंडी कैमियो खेल सकते हैं बैक एंड में अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन साबित हो सकता है गुलजार का अगर यहाँ से वो 15-20 रन बना जाते हैं। आखिरी के कुछ 3-4 ओवर्स ही बचे हैं, तो गुलजार पे भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। हालांकि बैटिंग जानते हैं गुलजार, लेकिन आज उस चीज़ को, अपने पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। अच्छी गेंद इस बार, बॉडी लाइन पे थी ये गेंद, रूम बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर रहे हैं फैसल। देखिए फैसल को 16 ओवर में इस्तेमाल किया था, 15वें ओवर में माफ कीजिएगा, उसके बाद अभी इस्तेमाल कर रहे हैं फैसल को डेथ में। तो कहीं ना कहीं फैसल जो है वो नए गेंदबाज है इन बैट्समैन के लिए, गुलजार के लिए, अभी आकिफ के लिए भी, तो वो चांसेस तो लेने पड़ेंगे। जोरदार प्रहार, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद रहेगा, 1 ही रन। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फैसल। डेथ ओवर में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक उनको छुपा के रखा था, और शायद ये प्लानिंग होती है, एक टीम टैक्टिक्स होती है कि कब किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है। उनको 16 ओवर तक बिल्कुल भी नहीं लाया था, 16 ओवर में लाया, 18वें ओवर में ला रहे हैं। वहीं पे आकिफ कुछ बड़ा करने का प्रयास जरूर रहेगा। जोरदार शॉट, हवा में गेंद, और गेंद गई है स्टेडियम से बाहर। 6 रन लिखे थे इस गेंद पे जब ये बैट से निकली थी। ऐसे ही कुछ और शॉट्स खेलने पड़ेंगे, अपनी टीम को एक अच्छी स्टेट में लाकर खड़ा करना पड़ेगा। 40 रन पे पहुंच चुके हैं आकिफ, एक जबरदस्त कैमियो खेलते हुए अपनी टीम के लिए। केवल 10 रन दूर अपनी हाफ सेंचुरी से, और ज्यादा गेंदें भी खेली नहीं है, केवल 25 बॉल है। ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी किस लेवल का है, इस खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, वो साफ दिखाई देता हुआ। 25 गेंदें 40 रन, आकिफ एट द टॉप ऑफ हिज गेम एट दिस पॉइंट। यॉक कराने की कोशिश थी, डाउन द ग्राउंड फिर से गए हैं, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या दूसरे रन की तरफ भागेंगे? गए हैं बिल्कुल दूसरे रन की तरफ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट, पहले वो बड़ा शॉट, उसके बाद जेंटली लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और 2 रन आराम से बटोरने में कामयाब। करंट रन रेट 7.51 का थोड़ा सा बेहतर होता हुआ, क्योंकि इस ओवर में अभी तक 10 रन आ चुके हैं, अभी भी 1 गेंद बची है। क्या इस गेंद पे भी बड़ा शॉट आएगा? आकिफ पुल किया है, हवा में गेंद, क्या इस बार खिलाड़ी प्ले में आएगा? नहीं, थोड़ा सा आगे ही गिरी उनकी गेंद। लकी रहे यहां पे आकिफ के, वो ज्यादा फील्डर के पास वो गेंद गई नहीं। सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति 135, 5 विकेट के नुकसान पे। Wickets falling, 1 for 12, 2 for 51, 3 for 64, 4 for 82, and the 5th wicket for 116. 19 runs have been put together by these two. Faisal, 2 for 7, none for 17 from his 2 overs. And Akif is playing an important knock for his side, 43 of 27. Gulzar Guli, 3 of 4. They have Javed Jadoo there, who can give a fair tonk to a ball. He hits those long balls. The batters to come.
Shahid Shabir, Parvez Alam and Javed Jadoo. Irshad Rashid is the other batter. Bhupinder Singh comes on to bowl his fourth. Run rate of 7.5 at this stage will take them to 150. Bhupinder Singh to bowl his fourth over. Aqib Ghani is trying to just pelt it down the ground and looking for the second, which was never on. The fielders have done well. The fielders from JK11 Shopian, they have caught everything that has come their way and they have fielded brilliantly. The outfield particularly has been up to the mark. Bhupinder Singh will try to slant that ball across the right-hander. That's a brilliant delivery. Seeing the batter trying to give some room. Bowling wide of off stump, slanting that ball across the right-handed batter. That's a good ploy. That's what they have done. That's what Bhupinder Singh has done throughout the game. It's again slower delivery. No pace whatsoever to work with. And Gulzar Guli can only hit it behind square to Rafid Yunus to pick up a single. Aqib Ghani importantly will be on strike. This is important for Sky Stars Budgam. Bijbehara Premier League Edition 5 presented by TCI Max. He goes across the line, not finding the space once again. Junaid Bashir has been quite electric in that outfield. Just one more run. So runs coming in singles, no boundaries in this over so far. This is brilliant death bowling from Bhupinder Singh. Once again, slower delivery. And it trims the off stump. Wicket number 6. Bhupinder Singh gets his second. And Gulzar Guli, a dejected walk back to the pavilion. That is a brilliant cutter bowled by the left arm seamer. Beautifully bowled. It runs in swiftly. A very good action. And the follow through is brilliant as well. Trying to go across the line. The head hanging, in no position whatsoever, and losing his shape. This is not good batting. You know that the left arm spinner, left arm seamer is slanting the ball across the right-hander, and you're still trying to fetch that one from outside the off stump. No footwork, no position, losing the shape and losing his wicket. Javed Jadoo arrives in the middle. Strike rate of 143. And this is a positive matchup for Javed Jadoo because the ball, if Bhupinder Singh bowls over the wicket, that ball might find its way into the radar of Javed Jadoo, who likes to go across the line over mid-wicket. Next ball, he goes down the ground. It's a clean strike. And that's gone for 4 more. This is what I was talking about. That boundary ruins the over. 7 coming of the 19th. It's 1-4-2 for 6. Trying to bowl that back of the hand delivery. The length ball. Beautifully spotted by Javed Jadoo. And clearing his front leg. And smacking it back over the bowler's head for 4. 2 for 19. Bhupinder Singh has been outstanding with the ball today. 142 for the loss of 6. 6 deliveries to come in the innings. And they will be eyeing more than 150 here. Faisal. As I was mentioning that he's the bowler to be used by JK11 Shopian at the death. And him, Bhupinder Singh and Junaid Bashir combined have bowled at the death. Javed Jadoo and Aqib Ghani. Aqib Ghani will be eyeing his 50.
45 of 29. The two umpires for this match, umpire Javed Daryal and umpire Shoaib. So far they have been quite satisfactory in this match. The final over, the first ball, slower delivery. Looking to play that mini helicopter, not finding the middle of the bat, neither the placement, and the ball goes down to the deep mid-on boundary for a single. Faisal too has bowled well. He's not an express bowler, but he has bowled well. According to the situation, has looked to bowl full and on the stumps. It's more important when you're bowling at the death. Try to look for the block hole rather than bowling those length deliveries, as was bowled by Bhupinder Singh. And he was smashed down the ground for 4. Now Javed Jadoo. This will be exciting. Faisal to bowl the second delivery of the final over. And Javed Jadoo goes high. No distance, elevation only. It falls in the no man's land. But Akif Ghani has been run out via a direct hit from the outfield. Have a look at it. Once again, he was trying to go mid-wicket and send this one onto the road. More height than any of the distance. And probably the ball descending down and falling in the no man's land. There were two fielders, Rafid Yunus the kid and the bowler himself, but that ball fell between the two fielders. But nonetheless, they got the desired result. They got a wicket. And the wicket of the well-settled and the well-set batter, Akif Ghani, is gone for 45. It's 145 for 7. Shahid Shabir will be the man. He will be at the non-striker's end. And what's important for Sky Stars Budgam is that Javed Ghanai will be on strike. He'll be eyeing that mid-wicket boundary. Faisal to Javed, and Javed clears his front foot once again, gets that slice of his bat, and it has been put down. The batsman will look to come back for 2 more. Fielding lapse in the closing moments of the first innings. That will hurt. Faisal was about to pick up his second. Javed Jadoo was trying to go over extra, slicing the ball, and the fielder making a mess of it. 2 more runs take the total to 147. 3 more deliveries to come. Javed Jadoo, slower delivery, taking the pace off, and Javed Ghanai in no position whatsoever, hanging his head and missing the line of the ball completely. The position of the head and the base, they are very basic when you're trying to hit any shot, any big shot out of the ground. The power only comes, and he has been castled. Brilliant delivery in the block hole. Javed Ghanai had no answers for that. Beautifully bowled by Faisal. You miss, I hit. Javed Jadoo has to walk back. Wicket number 8. And Sky Stars Budgam are finding themselves short of 150 here. 147 for 8. Faisal lefty picks up his second wicket. He might have bowled only 3, 2.5 to be precise in this innings so far.
might bowl only 3 overs, but the way he has bowled was exemplary. Not express, but he has looked to target the stumps and looked to bowl full and straight. That's the hallmark of a bowler who is not express and bowling at the death. Parvez Alam is the man who is going to replace Javed Jadoo. He will be on strike for the final delivery of the 20th over. Sky Stars Budgam winning the toss, batting first in game number 2 of TCI Max presenting BPL Edition 5 2025. JK11 Shopian skipper will be a very happy man, restricting them to 150 or below 150 so far. Can they get to 150? Parvez is on strike. The final delivery of the 20th over coming up. Long on, deep mid-wicket. Long off. It is Faisal. Once again searching for the block hole. Misses the off stump, but the batsmen run through for a bye to close the innings at 148. And they have been able to restrict them below 150. There will be a psychological advantage to the team of JK11 Shopian. 149 will be the target for Sky Stars Budgam. And let's summarize this innings. Sky Stars Budgam winning the toss, batting first, and on the back of a brilliant 47, supported ably by Adil Guldan's 34, and then no other conspicuous contributions coming from the other players. Akif Ghani stood tall with 47, Adil Guldan's 34. From their 20 overs, Sky Stars Budgam have managed 148 for the loss of 8. The bowlers doing an exceeding job. Mohsin CP only bowling 2 overs for 16. Bhupinder Singh, he was exceptional. Picked up 2 wickets in his 4 overs. 2 for 19. Junaid Bashir, 2 for 33. Aman Alvi, 1 for 27. Vineet Kumar, 1 for 15 from his 2. Rafid Yunus, none for 9 from his 1. And Faisal Lefty, he was outstanding. 3 overs, 23 runs, and he picked up 2 wickets. 148 for 8 from their 20 overs is what Sky Star Budgam managed. 149 will be the runs required by JK11 Shopian when they come out to chase. We will join you shortly. Stay tuned to Bijbehara Premier League Edition 5. And becoming a top fan of the BPL5 will require you to like and follow the official Facebook page of BPL and the YouTube channel, and share this live broadcast to the 5 of your friends and stand a chance to win a cap being engraved with a BPL5 on it. Bijbehara Premier League official merchandise.